फ्रेंड्स, वेलकम टू ESL क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फ्रेजेस का यूज बताती हूँ जिनका यूज कनेक्टर के जैसे होता है हमारे लाइफ में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे कॉन्वर्सेशन को कनेक्टर्स कितनी फैसिलिटेट करती है। जब भी हम बात करते हैं, वी नीड अ लॉट ऑफ कनेक्टर्स टू कंटिन्यू विथ आवर टॉक। सो आज हम ऐसे ही कुछ फ्रेजेस को देखेंगे जो बिगिन होते हैं प्रीपोजिशन से और फंक्शन करते हैं कनेक्टर्स का। सो द फर्स्ट इज इन द मीन टाइम, इसी बीच में। द कैट वॉज अबाउट टू ड्रिंक द मिल्क, इन द मीन टाइम आई एंटर्ड द रूम। द नेक्स्ट वन इज एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज आई reached the station, the train had departed. The next one is that's why, इसलिए। His parents was quite poor, that's why they could not afford to buy a bike for him. The next one is as if. As if का मतलब होता है मानो कि। He is walking as if he may be a limb. The next one is whereas. Whereas का यूज हम ज्यादातर दो सेंटेंस में जो कंट्रास्ट है उसके लिए यूज करते हैं। I like tea, whereas my daughter prefers coffee. The next phrase is instead of. Instead of का मतलब होता है के बजाय। Instead of preparing for the exam, you're wasting your time in playing games. The next one is in spite of. In spite of का मतलब होता है के बावजूद। In spite of all his wealth, he could not earn fame. The next one is in addition to. He knows 3 more languages in addition to English. Next phrase is every now and then. इसका मतलब होता है समय समय पर। I keep instructing my daughter every now and then. And the last phrase is a short while. थोड़ी देर में। After a short while, he returned from the market. So I hope this video may be fruitful for you, and keep watching ESL classes and just keep motivating me to make more innovative videos on various topics. Thanks for watching this video till end.